Okay, good morning everyone. I hope I'm audible to all of you and the screen is also visible. So in the last lecture we have discussed what are semaphores, and we have seen the two types of semaphores. First is the binary semaphore and second is the counting semaphores. Binary semaphore can have only two possible values, one is 0 and another is 1. And if we talk about the counting semaphores, then counting semaphores may range from minus infinity to plus infinity. And we have seen how to solve the numericals or some issues related with the binary semaphores. And today we will discuss some classical problems of synchronization. And there are three different problems which we have to discuss today. Very first is bounded buffer, which is also known as producer-consumer problem. And second is readers-writers problem. And third is dining philosopher's problem. So in today's lecture, we will discuss and cover the first two problems of synchronization, that is the producer-consumer as well as the readers and writers. So as we all know, अभी हमने lab में भी implement किया है producer consumer problem using counter variable. So problem will remain same. We have two different processes. One is producer, another is consumer, which shares a common buffer, and producer produces the item and put it into the buffer, whereas consumer consumes the item from the buffer. Now we will solve this same problem with the help of semaphores. We will use the concept of both binary semaphores as well as counting semaphores to solve this problem of producer and consumer. Now, while solving this problem with the help of semaphores, these are some of the assumptions which we have to make. First of all, we have n different buffers which can hold one item only. So we have n buffers of size 1. Now just see here we have three different semaphores. One is the binary semaphore and next two are the counting semaphores. So एक हमने binary semaphore लिया है जिसका नाम mutex है. Initialize हमने किया है 1 से. And there are two more semaphores, but they are counting semaphores. That means they can have any value from minus infinity to plus infinity. So first semaphore is full and second semaphore is empty. So this value of full semaphore is initialized to 0 and value of empty semaphore is initialized to n. So full क्या बताएगा buffer कितने buffers full हैं और empty क्या बताएगा कितने buffers empty हैं. So this is what we have to do, and we will just try to solve this bounded buffer or producer consumer problem using the concept of semaphores. So we have n different buffers, each can hold only one data item, and side by side we have initialized three semaphores also. One is binary semaphore, which is mutex, and two are counting semaphores. One is full and second is empty. Now this is what the producer consumer problem is, and semaphore is one of the solution. And as you can see, here we will have the same two shared pointers. One is in, which is used with the producer process, and second pointer is the out, which is used with the consumer process. And extra, now we have three semaphores which are shared by both the processes, by the consumer process and the producer process. One is mutex, another is empty, and another is full. Now mutex will be initialized to 1, and the purpose of this mutex semaphore is to ensure mutual exclusion. That means अगर producer process reduce कर रहा है, then definitely consumer process उसको उस time पर consume नहीं करेगा. This is the task of this mutex semaphore, to ensure the mutual exclusion. Empty will be initialized to n because initially हम क्या assume करेंगे कि all the buffers are empty. So empty will be in and full will be 0. That means nothing is there in the buffers. So this is the task of the producer process. Producer process को क्या करना है? Producer process को item produce करनी है buffer में, item को put करना है और value करनी है update की
इनकी अपडेट, and similarly consumer has to consume the item and has to update the value of out pointer. And if we talk about the solution of this producer consumer problem using the semaphores, so as we all know that wait, that is wait operation is used as an entry section. So for the producer process, wait will act as the entry section. Then this is the critical section where actually the values will be updated. And lastly, to exit the critical section, the producer process will use signal. Similarly, if I talk about consumer process, if consumer process wants to enter the critical section and wants to consume the item or wants to update the value of out, so it has to go through entry section, which will be wait of full. And lastly, it will be if exit is there for consumer process, then it has to invoke the signal of empty. And this is the entire code for the producer process and the consumer process, and we are assuming some predefined values. Mutex will be initialized to 1, empty will be initialized to n, and full will be initialized to 0. And this is how the bounded buffer problem will work. So just let me share the board with you for better understanding of the concept, and then you will be able to understand it more easily and more quickly. Okay, is the board visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. So this is the code for the producer consumer problem if we are solving it with using semaphore. Now we have 3 different semaphores. One is mutex, another is empty. So initially सारे के सारे ही empty हैं, so it is equals to n, and full कितने हैं? Initially it is 0. And let us suppose I am just taking a buffer of size 5, or we can say the 5 different buffers, each of one can hold only one item. तो भाई यहाँ पे initial n की value 5 हो जाएगी, mutex will be 1, empty will be 5, full will be 0. That means at this particular time, initially all 5 buffers are empty and 0 buffers are full. So this is the code for producer and consumer. Now we have used the concept of semaphore. So let's see how this code will work. So I would expect answer from all of you. So you just have to tell the updated values of the these 3 semaphores. So we initially buffers empty hai, and let's suppose producer comes and producer wants to enter the critical section. So इस critical section को access करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर प्रोसेस को एंट्री सेक्शन को कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एंट्री सेक्शन के कोड में क्या है? वेट ऑफ एम्प्टी एंड वेट ऑफ म्यूटेक्स. तो भाई वेट ऑपरेशन क्या करता है? वेट always decrement the value of semaphore by 1, signal always increment the value of by semaphore by 1. So initially value of empty is 5. तो अगर empty value 5 है, producer process आया, तो producer process को ये वाला कोड रन करना पड़ेगा critical section में एंटर करने के लिए. तो भाई weight of empty, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे empty की? बताते जाओ साथ साथ. What will be the value? 4. What will be the value? 4, sir. 4. Okay, very good. I will show भाई weight of empty क्या करेगा? इसको decrement कर देगा 1 से. So it will be become 4 from 5. Again weight of mutex. So weight of mutex की initial value 1 है. Now what will be the value of mutex? 0. 0. It will become 0. तो भाई ये जैसे ही 0 हो गया, उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया. क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो भी कॉमन वेरिएबल्स थे दोनों प्रोसेसेस के बीच में, बफर हो गया, इन एंड आउट हो गया, उनकी वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे बफर के अंदर सपोज हमने कोई भी एक आइटम को पुट किया, सपोज 100 प्रोड्यूसर प्रोसेस ने पुट किया, एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूसर प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स टास्क ऑफ inserting an item into the buffer, and if producer process wants to exit the critical section, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो mutex की वैल्यू को अपडेट करेगा. तो mutex की वैल्यू अपडेट होगी मतलब सिग्नल ऑफ mutex. तो mutex कितना हो जाएगा फिर से? सिग्नल ऑफ mutex 1 हो जाएगा सर. 1. So signal means we have to increment the value, so it will be set to 1.
एंड सिग्नल ऑफ फुल को भी वो सिग्नल कर देगा, दैट मींस फुल की वैल्यू भी 1 से अपडेट कर देगा एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूसर प्रोसेस विल एग्जिट द ओवरऑल सिस्टम। सो मतलब क्या है इसका भाई, प्रोड्यूसर प्रोसेस का काम क्या है, एक आइटम को प्रोड्यूस करके उसको बफर में डाल देना। तो सबसे पहले उसने एमडी की वैल्यू को एक कम किया और म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 किया और उसके बाद उसने अपडेशन की और एग्जिट करते टाइम उसने म्यूटेक्स को फिर से 1 कर दिया और फुल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, एक बफर के अंदर आइटम डल चुकी है, तो दैट मींस अब जो एमडी की अपडेटेड वैल्यू है वो 4 है। नाउ आउट ऑफ 5 बफर्स 4 आर स्टिल एम्प्टी एंड वैल्यू ऑफ फुल इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस एक बफर अब फुल हो चुका है, 4 अभी भी एम्प्टी है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड इफ अगेन सपोज प्रोड्यूसर प्रोसेस वांट्स टू प्रोड्यूस सेकंड आइटम देन अगेन इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ एम्प्टी, दैट इज रेट ऑफ एम्प्टीज को 3 करेगा, म्यूटेक्स को फिर से 0 करेगा, फिर से वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और सपोज उसने 200 इंसर्ट किया एंड इफ द प्रोड्यूसर प्रोसेस वांट्स टू exit the critical section, then it will again update mutex value from 0 to 1 and full value from 1 to 2। तो भैया अब यहाँ क्या मीनिंग है, दो आइटम्स बफर में आ चुकी हैं 100 and 200, empty की वैल्यू 3, that means there are 3 different slots which are empty in the critical section and 2 are full out of 5 different buffers. So this is how the task will be done. Okay, so just let me assume if प्रोड्यूसर प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है और तब कंज्यूमर प्रोसेस आना चाहे तो क्या होगा। तो भी अगर थर्ड टाइम प्रोड्यूसर प्रोसेस फिर से चलेगा तो एमटी की वैल्यू को 2 कर देगा और म्यूटेक्स को फिर से 1 की जगह 0 कर देगा। तो भाई अभी प्रोड्यूसर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। नाउ इफ दैट पर्टिकुलर टाइम कंज्यूमर प्रोसेस वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, वेट ऑफ फुल, तो फुल पे वेट चलाएगा तो इसको 1 करेगा and rate of mutex. Now here value of mutex is already 0 and mutex is a binary semaphore, तो भाई इसकी वैल्यू 0 से हम और कम नहीं कर सकते, it can either be 1 or 0, so that means यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। तो जो म्यूटेक्स का मेजर टास्क है वो यही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करना। तो अगर 1 है देन डेफिनेटली 0 हो सकती है, लेकिन अगर ऑलरेडी म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है दैट मींस कोई ना कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, नन ऑफ द प्रोसेस कैन एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज हाउ द कंज्यूमर प्रोसेस विल नॉट बी एबल टू एंटर दिस पर्टिकुलर टाइम। तो भाई अगर प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में सपोज 300 इसको कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, 300 किया, थर्ड प्रोसेस आया, उसके बाद उसने इसको अपडेट किया, तो फिर जब भी वो एग्जिट करेगा तो म्यूटेक्स को 1 कर देगा 0 से एंड फुल की वैल्यू को भी वो 1 से इंक्रीज कर देगा, सो इट विल बी 2 out of 1. So now this is the entire scenario. अब हमारा प्रोड्यूसर प्रोसेस एग्जिट कर चुका है। Now no process is in critical section. Now if suppose consumer process comes and wants to consume any item, so this is the code for the consumer process. So wait of full. तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमटी की वैल्यू 2 हो गई है, फुल की वैल्यू फुल को इंक्रीमेंट करेगा जब भी प्रोड्यूसर प्रोसेस एग्जिट करेगा, सो फुल विल बी 3. सो 3 फुल है एंड 2 एम्प्टी बफर्स है और अभी म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है. Now consumer process wants to enter the critical section, so this is the code for the consumer process. Consumer process first of all wait operation चलाएगा फुल पर. तो भाई फुल पर क्यों चला रहा है wait operation? Because consumer process हमेशा मिनिमाइज करता है फुल को, तो उसने कंज्यूम करनी है तो एक फुल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फुल की वैल्यू यहाँ से 3 से 2 हो जाएगी, म्यूटेक्स को वो करेगा 0, दैट मींस उसने लॉक कर दिया. 0 करते ही कंज्यूमर प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा बफर ऑफ आउट से आइटम. तो हमेशा सबसे पहले फर्स्ट आइटम कंज्यूम होती है, दैट मींस 100 विल बी कंज्यूम्ड एंड 100 विल बी आउट ऑफ द बफर and the value of out will be updated from 0 to 1. out भी हमारा यहाँ जाएगा, इन हमारा यहाँ पे है, इन हमारा next empty position को अभी नोट करता है and out will be updated by 1. and if consumer process wants to exit the critical section तो वो फिर से mutex को 1 सेट कर देगा, that means कोई और प्रोसेस आना चाहे
तो वो एंटर कर सकता है, और एम्प्टी की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, बिकॉज कंज्यूमर प्रोसेस का काम क्या है, एक एम्प्टी स्लॉट को बढ़ा देना, एक फुल स्लॉट को कम कर देना। तो ये एम्प्टी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। नाउ देयर आर 3 एम्प्टी स्लॉट्स एंड 2 full slots in the buffer of size 5. So this is how this entire code will work. So I hope the things are very much clear to you. तो भाई अगर कंज्यूमर हमारा क्रिटिकल सेक्शन में होगा तब वो म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 करके जाएगा, तो तब प्रोड्यूसर प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता। और अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा तब भी म्यूटेक्स की वैल्यू 0 होगी, तो भी कंज्यूमर प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता। सो दिस इज द मेजर टास्क ऑफ म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर। जो भी प्रोसेस एंटर करेगा वो 1 से 0 कर देगा म्यूटेक्स की वैल्यू को। तो जब तक वो वाला प्रोसेस एग्जिट नहीं होता तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं एंटर कर सकता, बिकॉज जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट हो रहा है तो वो सिग्नल लगा रहा है म्यूटेक्स पे, दैट मींस उसकी वैल्यू को फिर से 0 से 1 करके एग्जिट कर रहा है। एनी डाउट एनीवन इन दिस एंटायर कांसेप्ट, प्लीज लेट मी नो if anyone has any doubt. Okay, what about others? Only Ayush is responding. Okay, perfect. So I hope the code is very much clear to you. So this is the beauty of the code. The code is designed something like that कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा, और प्रोड्यूसर का काम आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में डालना है। दैट मींस वो फुल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और एम्प्टी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई हमेशा हमारे प्रोड्यूसर के स्टार्टिंग में वेट ऑफ एम्प्टी है, बिकॉज वेट हमारा डिक्रीमेंट करता है 1 से, तो एक एम्प्टी को कम करेगा, और जब एग्जिट करेगा तो फुल की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर का काम कंज्यूम करना है, वो एम्प्टी की वैल्यू को इंक्रीज करता है और फुल की वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो फुल को हमने वेट लगाया स्टार्टिंग में, दैट मींस वैल्यू ऑफ फुल विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, एंड व्हेन कंज्यूमर विल एग्जिट इट विल increment the value of empty by 1. So this is how this entire scenario will work. So this is about the producer consumer problem, the solution of producer consumer problem with the help of semaphores. And just let me go through the slides. Okay, thank you all of you, those who have responded. Okay, so this is the final code for the producer consumer problem which is visible to you, and these are some initial assumptions. We will always set mutex to 1, empty to n, full to 0, and this is how the code will work. And this entire section is the critical section जहाँ पे जो भी कॉमन है इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में उनकी वैल्यूज को यहाँ पे अपडेट करेंगे. So this is how the things will work. So this is the code for the producer process, which is just I have explained the thing. So as you know, we must make sure that the producer and the consumer make changes to the shared buffer in a mutually exclusive manner, and the producer must wait for an empty space in the buffer. So, and this is the code for the consumer process, which I have just explained you, and the task of the consumer process is to remove an item from the buffer and to update the value of the out pointer, and this is how the code will work. So the consumer must wait for a filled space in the buffer. We must make sure that the producer and the consumer make changes to the shared